There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. इस हफ्ते चौंका देने वाली, अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय तस्वीरें हमारे सामने आई. Not thanks to Shweta madam, thanks to the James Webb Space Telescope. Just look at these lovely scenes unfolding. Beautiful. #unfold the universe. Stars being born and dying. Galaxies. Cosmic cliffs. Exploding, ladies and gentlemen. Shit! You can hear him here too? What's exploding, Arnab? The stars? The chests are very dangerous looking. The chest? It's gone totally crazy, out of control crazy, ladies and gentlemen. Absolutely crazy. Downright crazy. Each way crazy. 360-degree crazy. It is really crazy. You look at all these stars and the cosmos and the universe and you think of how small your existence on this planet is. And then you look at TV news and you go, हैं? माना कि ऑपोजिशन के पास और कोई काम नहीं है, लेकिन जर्नलिज्म के नाम पे टीवी न्यूज़ करने वालों, तुम तो थोड़ा कुछ बेटर डिस्कस कर सकते थे. On Tuesday night, the ticker writers at Republic got to release their full existential angst on their viewers. Lions look angry? Really? Want lions without teeth? They say the lions have teeth. Fangs. What did they want? #lions with dentures. What lions with a teddy bear look? Modi's angry lions versus Nehru's sweet lions? Mr. Owaisi, what did you want? Lions with a teddy bear look? Cute lions? What do they want? If they wanted invite, why did they oppose project? Huh? What did they want? Starved looking lions on a keto diet? I'm pretty sure that the only point of this debate was to give TV Newsance some content. If you want to know more about this cute lion versus angry lion controversy, listen to our interview with one of the sculptors. कि लोगों को इस तरह का एक तो इतना बड़ा साइज के अंदर 21 फीट में इससे पहले अशोक स्तंभ देखा नहीं था. दूसरा ये है कि जिस एंगल से इसको दिखाया जा रहा है नीचे से, तो उसमें ये एक अलग एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन जब आप उसको सामने से देखेंगे तो इस तरह का कोई भी आपको नहीं लगेगा. Moving on to इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, bigger than the lion's roar. Sudhir Chaudhary is joining आज तक. I know what you guys are thinking. खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, सुधीर, श्वेता और nanochip. Heck, the gold standard can become more golden with a shiny new science department. एक तरफ मोदी जी और योगी जी हैं जो डबल इंजन की सरकार से यूपी को सीधा टोक्यो बना रहे हैं. दूसरी तरफ सीधा श्वेता और सुधीर अपने डबल इंजन के जोर से अपने नोएडा स्टूडियो को एक पुलिट्जर तो दिला ही देंगे. क्या क्या करामात दिखा सकते हैं दोनों, जरा सोचिए. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए. वेरी रिसेंटली आज तक के गोल्डन बॉय कमांडर गाओ केम अप विद दिस न्यू फ्लड जिहाद थ्योरी. असम में आई बाढ़ को ये जिहाद का नाम दे रहे थे. इवन दो द सीएम ऑफ द स्टेट हैड सेड कि भाई थोड़ी मर्यादा रखिए, ट्रेजेडी को कम्युनल ना बनाइए. Poor Commander Gao could only tweet about flood jihad. But with Sudhir bringing on सुनहरे दिन on India Today, ये flood jihad की theory सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं रहेगी, प्राइम टाइम पे भी चलेगी. In fact, सावंत and Sudhir together can head a department, जिहाद R&D department, जिसमें ये हर रोज नाना प्रकार के जिहाद को इजाद कर सकते हैं. एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है. सेमी लिक्विड जिहाद, सेमी सॉलिड जिहाद, गैस जिहाद. Sounds a bit like indigestion problem and not news. I guess same in their case. Now, it's not clear when Sudhir will come and do his show on Aaj Tak, but I'm guessing it'll be 9 p.m. so that India Today group can balance a little. You know, एक तरफ India Today में अंग्रेजी में राजदीप can talk about assault on free speech by arrests of journalists like Zubair. दूसरी तरफ शुद्ध हिंदी में सुधीर जी can talk about designer पत्रकार supporting टुकड़े टुकड़े gang. Perfect balance. This is going to be a lot of fun to watch, and we will be watching. With star anchors like Sudhir and Aman की no आशा moving on to greener pastures, Zee News में बड़े सवाल उठाने का सारा भार अब अदिति जी पे आ गया है. इतने बड़े सवाल पूछ रही हैं हर हफ्ते. अदिति ने इस हफ्ते भी बहुत बड़ा सवाल पूछा.
ताल ठोक के हमारी बहस इसी सवाल के साथ है कि ज्यादा बच्चे कुदरत का कानून कैसे हैं? ये कुछ जाना पहचाना सुना सुना सा सवाल लग रहा है ना? ये पहले सुन चुके हैं हम। 1 year ago. क्या ज्यादा बच्चे कुदरत का कानून माने जाते हैं? आहा, हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है और फिर 12 जुलाई को अदिति की डिबेट आती है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये वो खुद बोल रही हैं। हमारे यहाँ भी बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई जाती है। नाम ले लेकर ठीकरे फोड़े जाते हैं और ठीकरे तो फोड़े जाते हैं, बहस भी होती है कि कौन आबादी बढ़ा रहा है। 1-2 दिन बहस भी चलती है और फिर सब कुछ रफा दफा हो जाता है। तो मत करो ना यार, हर साल कौन फोर्स कर रहा है? मतलब कभी कभार टीवी न्यूज देख के इतना डेजावू हो जाता है हमें दैट यू फील लाइक यू आर लूजिंग योर सेंस ऑफ टाइम, एक्सेप्ट यू आर नॉट लॉस्ट इन सम कूल साइंस फिक्शन फिल्म बट ट्रैप्ड इन द नोएडा स्टूडियोज ऑफ जी न्यूज। Aditi on Zee News hosted a debate show on population control on 12th of July this year. It was the same show that Aditi hosted on the 12th of July last year. The formula is super simple. पहले same topic उठाओ और फिर same graphics भी यूज करो, फिर same to same सवाल पूछो। एक साल में क्या क्या नहीं बदल जाता है। मतलब सुधीर जी से आज तक भी चले जाता है, पर अदिति की जी न्यूज की न्यूज प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं बदलती। वोट के लिए जनसंख्या विस्फोट पसंद नहीं। इसमें हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? जनसंख्या नियंत्रण में हिंदू मुस्लिम तो वोट के लिए क्या जनसंख्या विस्फोट? ये मुसलमानों को कौन टारगेट कर रहा है? राजनीति टारगेट कर रही है, स्टेटमेंट्स देकर टारगेट किया जा रहा है। एक्सीलेंट, कोई एफर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। सेम स्क्रिप्ट, सेम एंकर, सेम डायलॉग बाजी, सेम टू सेम एसपी लीडर। हर साल जी न्यूज के कैमरे का फोकस इस व्यक्ति पे होता है, इस एक व्यक्ति पे उनका फोकस होता है जो 100 साल से एक ही बात कर रहे हैं। Doesn't he look 100? He's 92. हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन के दिन जी न्यूज इन महाशय से एक अच्छा कंट्रोवर्शियल बयान उगलवाते हैं और फिर उस पे डिबेट करते हैं। Quite obviously, there's no one else Zee News can speak to, and also, of course, finding a new troublemaker, that's too much trouble for Zee News' guest coordinator. अल्लाह ने पैदा की है, वो दुनिया में आनी है कीमत पर, उसको आप रोक नहीं सकते, वो कानून इलाही है। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। जिन 2 सांसदों की बात मैं आपसे कर रही हूँ, मैं उनका ताल्लुक आपकी पार्टी से। जी, हमारी पार्टी से जी, आपकी पार्टी से है और मैं उन दोनों स्टेटमेंट्स पर आपकी राय मांग रही हूँ। मैं कह रही हूँ पार्टी उनके साथ है या पार्टी उनके खिलाफ है। शफीकुर रहमान बग के स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना सर? अरे सर, आप मुझे क्या चैलेंज करेंगे? आप खुद ही इस वक्त चैलेंज रहे टीवी पर। After all this repetition, of course you repeat the same old agenda, हिंदू मुस्लिम। जितनी रूहें अल्लाह ने पैदा की हैं वो दुनिया में आनी है वक्त पर, उसको आप रोक नहीं सकते, वो कानून इलाही है। बोलिए इस पर। बच्चे अल्लाह की देन, तो फिर दाल रोटी किसकी जिम्मेदारी है? बच्चों की भरमार क्या इसके लिए किसी एक धर्म को ही जिम्मेदार या कसूरवार ठहराया जा सकता है? बच्चे तो अल्लाह की देन है, उन्हें रोजी रोटी देना वो किसकी जिम्मेदारी है? आप तैयार है उसके लिए? पहले जनसंख्या, आपका देश तैयार है उसके लिए? जैसे कि मैंने कहा, एक साल में क्या क्या नहीं बदल जाता। अदिति का हेयर स्टाइल भी इवॉल्व हो गया है एक साल में, लेकिन उनका न्यूज का कंटेंट नो लक देयर। Same anchor in the same studio doing the same debate using the same statements and the same visuals. नेता और एंकर सेम टू सेम अपना रोल निभा रहे हैं और एडवर्टाइजर्स भी अपना रोल निभा रहे हैं इस पूरी साइकिल में, और आप भी एज व्यूअर्स अपना रोल निभा रहे हैं टू कीप दिस व्हील चर्निंग। ये विशियस सर्कल ना नेता तोड़ेगा, ना एंकर तोड़ेगी, ना एडवर्टाइजर्स तोड़ेंगे। बच्चे आप, विल यू ब्रेक दिस सर्कल? To break this ridiculous circus in the name of news, you need to step up. You need to pay to keep news free and make sure that news serves the public interest. Log on to newslaundry.com and subscribe to News Laundry. Hashtag subtle plug, as subtle as Aditi. Aditi is not alone. Her fellow comrades from the world of TV news marked the World Population Day yet again to tell the majority 80% Hindu कि भाई आप खतरे में हो। इसको इस तरीके से समझिए, जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाए और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाए तो फिर क्या होता है? तो फिर अराजकता होती है।
मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही देश में शांति की गारंटी है क्या? लेकिन आरोप है कि जिन इलाकों में मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है वहां भी सरकारी स्कूलों के बोर्ड पर उर्दू लिखकर वहां रविवार की जगह शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन बच्चों को छुट्टी दी जा रही है और ये बहुत खतरनाक बात है। क्या इस देश में के कुछ हिस्सों में इस्लामिक देशों वाली सोच या फिर विचारधारा पनप रही है? देश को झकझोर देने वाली एक बड़ी घटना हुई है। मुसलमानों की ज्यादा आबादी वाले इस इलाके में स्कूल की छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन कर दी गई और ये हो गया। यानी हर दशक में आप देख लीजिए हिंदू आबादी लगातार थोड़ी घटे ज्यादा घटे घटती चली गई और मुस्लिम आबादी जो है थोड़ी बढ़े ज्यादा बढ़े लेकिन बढ़ती चली गई। India is exploding, ladies and gentlemen, with people. There's nothing to be proud about. This is a population bomb. And the population bomb, ladies and gentlemen, is perhaps our biggest threat. In this exploding debate, ladies and gentlemen, Arnab will not be giving you any exploding information. Allow us to fill that gap. According to the most recent data, India has seen a dip in its total fertility rate, with the sharpest decline among the Muslim community. What TV news will also not tell you is that the UP population bill has some crazy clauses like sterilization. Check this episode out to know more about that. This bill hasn't seen any progress since last year because the Yogi government is quite cryptic about when it will be discussed and voted upon. In this episode, we also discuss the various limitations that such legal acts entail. So you should really check out this episode from last year. मतलब अदिति की तरह मैं डबल काम नहीं करने वाली. ये एपिसोड देख लेना. Earlier this year, another bill called the Population Regulation Bill 2019 was withdrawn from the Rajya Sabha, where BJP member Rakesh Sinha said that the government has other policy measures to ensure better family planning. But of course, TV news will not delve into actual news. World Population Day is marked every year to raise awareness about population control methods. But it's not meant to demonize any one single community. This year, the theme was harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all. How secular of UN. हमारे लिए हिंदू मुस्लिम में ठीक है, okay? This week, South Asia's oldest democracy saw some crazy scenes. Protesters took over seats of power in Sri Lanka as the president fled the country. लोग स्विमिंग पूल में डुबकियां लगा रहे थे, रेसलिंग करते हुए नजर आ रहे थे. My favorite was this image. Protesters inside Gotabaya Rajapaksa's residence watching the news about protesters inside Gotabaya Rajapaksa's residence. This is the first time in South Asia that a government has been unseated, not through a coup or military intervention, but through people's protests. Sri Lanka has come to this point after skyrocketing inflation, terrible economic mismanagement, and also some sheer bad luck. The Sri Lankan government, the former Sri Lankan government at least, bungled big time on some major issues. But there's one thing worth noting about President Gotabaya: his complete disregard for press freedom and journalists. He's been accused of threatening journalists through his career, saying stuff like, "Hey, anti-national cheezein nahi likhne ka kya?" There are some serious charges against him, including running death squads and kidnapping of journalists, which he denies, of course. When Gotabaya's brother Mahinda was president, 7 journalists were murdered and 6 more died during dangerous assignments. Journalists for Democracy in Sri Lanka, the JDS, includes attacks on media workers and takes this number much higher to 40. In 2010, Gotabaya himself sued the national newspaper, the Sunday Leader, asking for billions of rupees worth in damages. He infamously said, "If they can't afford it, they have to close down." Moreover, the Repressive Prevention of Terrorism Act has been used in Sri Lanka to target journalists. Most notably, one journalist in 2009 received 20 years sentence of rigorous imprisonment for causing communal disharmony through his articles. I highly recommend that you read this article on Newslaundry website by Reza from 2019 that talks of why Gotabaya as president is bad news for journalists in Sri Lanka. In fact, Gotabaya kya? Any leader who disregards the media and undermines press freedom is bad news for a country.
No matter who you support or which neta you vote for or which political party you support, you need an independent media that holds them to account and keeps power in check. मीडिया का काम है पब्लिक के सवाल उठाना, पब्लिक के सवाल पूछना, असली सवाल, नॉट नवेका टाइप सवाल. पावर चीज़ ही ऐसी है. Once you have it, it's very easy and tempting to misuse it. So you need an independent media to keep power in check. Without press freedom, authoritarians like Godbaya have all the freedom to truly run the country down to the ground. You don't want that now, do you? That's all the newses we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked it, please like it. Please share it with your friends and families. Leave your comments below. Your polite, nice comments. You can criticize us too, but please don't use abusive language. Keep it civil. Tell us what you like about the show. Tell us what you didn't like about the show. And tell us what you want us to do more. Until then, stay mad. That's the only way.